Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, Let's Play Game, and this is also comes in your unit number 1. Now students, what are games? Games क्या होते हैं? Games वो चीज़ होती है ना जिसे हम खेलते हैं, आपको सबको खेलना पसंद है, you all love to play games. आप सब लोगों को बाहर मम्मा से जब जैसे ही होमवर्क कंप्लीट हो जाता है आपको बाहर जाना है, आपको गेम्स खेलने हैं, आपको मस्ती करनी है. So game is a way of एंटरटेनमेंट और नॉट ओनली एंटरटेनमेंट स्टूडेंट्स, आप गेम से कितना कुछ लर्न करते हैं, आप उनसे कितना डिसिप्लिन हो सकते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो आप गेम से लर्न कर सकते हैं. And even you can make a career out of these games also, like Sachin Tendulkar, Limba Rams, and other sport personalities. So the next heading that we are going to study about is various types of games. So let me write down various types of games. So we will be learning about various types of games. Now students, if we talk about this various types of games, कितने सारे गेम्स होते हैं बच्चा, सिर्फ आज नहीं, हमारे एंसेस्टर्स भी कितने सारे गेम्स खेलते थे, यू नो, एंड दे यूज्ड टू मेक अ कंपटीशन आउट ऑफ दिस गेम्स. और कितनी सारी डिसीजंस हैं जो इन गेम्स की वजह से है. आप सब लोगों ने मे बी सम ऑफ यू मे हैव रीड दिस रामायण एंड महाभारत. सो आप सब ने देखा होगा दैट अर्जुन्स bow and archery competition, and in Ramayan, Sita Ma's Swambers. So all these games revolve, all these events revolve around the some type of game. So you know, similarly, हमारे राजस्थान में भी इतने तरह के गेम्स होते हैं, both like very very old games like सितोलिया है, गिल्ली डंडा है, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी. और you all play छुपा छुपी and पकड़ा पकड़ी. I used to play this chupa chupi and pakda pakdi when I was very very small. Okay, so chupa chupi is what? It's a hide and seek type game. Okay, if someone will be hiding and you will be seeking that person, and this is pakda pakdi. Pakda pakdi is you have to catch and seek type game hai. Okay, so these are some type of games are there. और बच्चे कुछ ट्रेडिशनल गेम्स, ये सारे ट्रेडिशनल गेम्स, और इनमें कोई ज़रूरत नहीं आपको कि बहुत सारे आपको इक्विपमेंट्स खरीद के लाने. लाइक चेस में आपको एक पूरा चेस बोर्ड चाहिए, या टेनिस में आपको टेनिस रैकेट चाहिए, कुछ इस तरह से. इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है ना. सो वी विल बी लर्निंग अबाउट दीज गेम्स. और गेम्स बच्चा, इन गेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कल्चर के साथ भी. कितने सारे गेम्स हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है. आप सब ने देखा होगा कि मकर संक्रांत जब होती है, so you all used to fly this kites. So it's a game which is associated, or kite flying is a game or sports which is associated with our Makar Sankrantri festival. So there are very very many festivals which are organized on the occasion of some festivals. So there are many games which are organized on the occasion of a festivals in different regions of Rajasthan. So you know, on the occasion of Makar Sankrantri, I have told you, like their kite flying is organized in many parts of Rajasthan. Like Sitolia is organized in Mewar, okay, and kite flying in Bagar, Marwar, and Dhundar. Okay, so these are some of the areas. Now, what is Sitolia? आपको पता है बच्चा Sitolia क्या होता है? Sitolia में क्या करते हैं बच्चा? ऐसे stones होते हैं कुछ. उन stones को हम एक के ऊपर अरेंज कर देते हैं. ओके, सो इसमें दो टीम्स होती है, इट्स अ टीम गेम. ओके, तो दो टीम होती है. सो क्या होगा, एक बॉल होती है, ठीक है. सो एक टीम इन सारे स्टोन्स को गिरा देती है. सो दूसरी टीम को इन सारे स्टोन्स को अरेंज करना होता है विदाउट टचिंग दैट बॉल. सो एक टीम उस पर बॉल मार रही होती है, अगर किसी ने बॉल को टच कर लिया, किसी की बॉडी पे बॉल टच हो गई, सो दैट पर्सन गेट्स आउट. सो इस तरह का एक गेम होता है सितोलिया. सो दिस इज अ गेम ऑफ सितोलिया. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स इफ वी वांट टू डिस्कस. Okay, let's discuss about them. The two types of games are
The two types of games are indoor games and second are outdoor games. Okay, so there are two types of games which are indoor games and outdoor games. अच्छा इनके अलावा भी बहुत टाइप के गेम्स होते हैं जैसे आपके ट्रेडिशनल गेम्स, मॉडर्न गेम्स. ओके, ट्रेडिशनल गेम्स जो हम बहुत टाइम से हमारे एंसेस्टर्स भी खेल रहे हैं और हम भी खेल रहे हैं, जैसे आपके दादा दादी जी भी खेलते थे. और कुछ मॉडर्न गेम्स जो आजकल हमने कल्टीवेट किए हैं या और दूसरी कंट्रीज से आए हैं और इतने पॉपुलर हो गए हैं. ठीक है, सो वी विल बी लर्निंग अबाउट देम. सो फर्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट इंडोर games. Okay, so let me write down the definition of indoor games first. Indoor games. Games which are played inside the house और इंडोर. इट्स नॉट नेसेसरी कि हाउस के अंदर ही हो बट इंडोर होना चाहिए. ओके, द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस और इंडोर आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. ओके, सो अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें आपके इंडोर गेम्स की, तो कोई आइडिया है आपको कि इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा? ओके, लाइक योर चेस. चेस इज एन इंडोर गेम. बिलियर्ड्स is also your indoor games. Okay, and there are some traditional games also which are indoor like char bar, which is char bar, chopper, महाभारत के बारे में अगर किसी को पता है, so you all know that this Mama Shatru, that I don't know the name of this, Duryodhan and this Pandavas and Kauravas, they play this game and उसमें उन्होंने द्रौपदी and अपना पूरा kingdom they lose there. So it's also like this type of games are also played. So it's also an indoor type game. Okay, so these are different types of games which are indoor. Also Sing Bhakri. Try to find out students ये सारे गेम्स होते क्या हैं और इन्हें प्ले कैसे करते हैं. ओके, अष्ट चंगा. ओके, सो अष्ट चंगा. So these are various indoor games. Now we'll be learning about some outdoor games. What is outdoor games are? So before learning this outdoor games, आप एक अपनी book में देखिए. There's an image given in your book of this chess and billiards. So you can see that these are both indoor games. Okay, students? Now we'll be learning about the next game, that is outdoor games. Let me rub this. So the next game is, what are the next type of game is outdoor games. Okay, games which are played outside the house or outdoor are called outdoor games. If we talk about some examples of this outdoor games, one of the most common example of outdoor games जो इंडिया में बहुत बहुत famous है, it is cricket.
ओके। और आपको पता है बच्चा, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? इट्स हॉकी, एंड इट इज ऑल्सो एन outdoor game. Okay, similarly archery, okay, बैडमिंटन। स्टूडेंट्स, आजकल बैडमिंटन हम अंदर भी खेल सकते हैं, बट ये तो आउटडोर गेम है। अगर आप एक पास बहुत ओपन स्पेस है और आप बैडमिंटन का पूरा कोर्ट इंडोर बना सकते हैं, सो इट कैन बी एन आउटडोर और इंडोर गेम बोथ। ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ सम गेम्स। अगर हम ट्रेडिशनल गेम्स की बात करें, एंड वो चाहे ट्रेडिशनल गेम्स, अगर आउटडोर गेम्स की बात करें, सो दैट इज छुपा छुपी, ओके, पकड़ा पकड़ी, सितोलिया। ओके, सो दीज आर सम आउटडोर गेम्स। ओके, एंड इसमें ट्रेडिशनल गेम्स भी हैं और मॉडर्न गेम्स भी हैं। सो अगर आपको आइडिया है आपके रीजन में बच्चा कौन से गेम्स प्ले किए जाते हैं, या कौन सा गेम आप खेलना चाहते हैं, आप अपने दादाजी से या अपने पापा से इनसे पूछिएगा कि व्हाट टाइप ऑफ गेम्स दे यूज्ड टू प्ले इन देयर चाइल्डहुड, कि वो किस किस तरह के गेम्स खेलना पसंद करते थे, या कौन कौन से गेम्स उन्हें खेलना अच्छा लगता था। ओके, सो दे विल बी टेलिंग यू द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, और आप उन्हें खेल भी सकते हैं, एंड यू विल गेटिंग एंजॉय। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे इन गेम्स को खेल के। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस आउटडोर गेम्स के बारे में, सो आप इमेजेस देखिए, आर्चरी की दी हुई है, कबड्डी की दी हुई है, रेसलिंग की इमेज दी हुई है, there's an image of hockey, table tennis and badminton. Now table tennis is a fully indoor game. Okay students, so आप try to find करिए कि ये जो सारी images हैं इनमें से कौन से indoor games हैं और कौन से outdoor games हैं. So this is type of an homework for you. Okay, so let's move to other topics. Now students, as we have discussed कि दो तरह के games होते हैं, outdoor game और indoor game. So outdoor games are the games which are played outside and the games which are played inside are called indoor games. ठीक है, तो ये एक तरह के टाइप्स हो गए गेम्स के। नेक्स्ट टाइप ऑफ गेम्स आर द गेम्स ऑन बेस्ड ऑन की नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्लेयर्स अटैच्ड टू इट। सो टाइप ऑफ गेम based on number of player. ओके, एक होता है आपका इंडिविजुअल गेम्स जिसमें आप अकेले ही खेलते हैं, लाइक चेस है ना। चेस में देयर इज वन गेम और सिंगल अपोनेंट्स होते हैं आप लोग, so it is an individual game style. Next is, so the example of individual game is chess, archery, okay, wrestling, etc. Okay, यहाँ आप सिंगल सिंगल खेलते हैं। Next type of game is which is called team games. Team games. Team games वो गेम्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, आप आपकी डबल टीम्स हो सकते हैं, 2% की, 3% की, 4% की, 7% की। ठीक है, लाइक योर हॉकी इज अ टीम गेम, क्रिकेट इज अ टीम गेम। इवन आप कैरम खेलते हो बच्चे, कैरम में भी आप टीम गेम बना सकते हो ना, opposites one and this adjacent ones type में. So these are team games. Now the examples are example. Write down the example: cricket, hockey, and even this tennis and badminton can
also a team games. सिंगल वैसे वो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, टेनिस एंड दिस टेबल टेनिस, बट आप टीम अप करके भी ये गेम खेल सकते हैं. एंड यू नो कबड्डी, फुटबॉल, baseball, etc. So these are the games which are team or called team games, जो हम हमारे में टीम मेंबर्स होते हैं. And these are the games जो आप में sportsman spirit develop करते हैं. Now students, one more thing I want to discuss with you, which is the national game of India. Which is the national game of India is. Do you have any idea? It is hockey. Now let me ask you one more question. Which is the state game of Rajasthan? Do you have any guesses कि state game क्या है राजस्थान का? Come on, try to guess what is the state game of Rajasthan is. You will be amazed to know the state game of Rajasthan is basketball. So basketball is the state game of Rajasthan. Now we'll be discussing a very popular sport that is becoming very, very popular nowadays. And the name of the game is Kabaddi. Okay. So now, this game, the matches of this Kabaddi are telecasted on this Doordarshan. Okay. And now children playing Kabaddi can be seen in every society and on streets also. And we can also see them playing cricket. So this, Kabaddi is getting very, very much popular. Okay. Now students, one more thing I want to discuss with you. This Kabaddi is a very traditional game of India. And what happens in this game, there's a court type thing. Okay. There's a partition. 7 players are there in the team. One team is there and the other team is here. So what happens, one member of the teams come in there, and all the member of this teams try to catch that person. And for a particular time, he has to stay there. और अगर वो बिना टच किए और बिना रोके इस टीम में वापस चला जाता है by touching some line, so he score a point. So this is the game of Kabaddi. Okay. So this Kabaddi is getting very popular nowadays. So I think you will be also love to watch this game of Kabaddi and etc. like this type of things. Now students, this completes our various types of games, and I will be giving you some questions related to this chapter, okay, to this topic that we have discussed till now. So the first question is, paste 5 indoor games in your scrap book. Paste 5 outdoor games in your scrap book. Next, write name of few traditional games of Rajasthan. Okay. Next is, which is the national sport of India? Next is, name the state game of Rajasthan. Okay. So these are the questions that you have to do
First is paste 5 indoor games in your scrapbook. कोई भी 5 indoor games, okay? Next is paste 5 outdoor games in your scrapbook. Outdoor games जो हम बाहर खेलते हैं. Write names of few traditional games of Rajasthan like Sitolia, Chupa Chupis, Gilli Dandas, and this kite flying. Okay, this type of games you have to write. What is the national sport of India? I have given you the answer of this just before. And last is the name the state game of Rajasthan. So this completes the question. Now we'll be doing discussing the further topics of the chapter.